Good evening everyone. So we are here with the next video, and in this video we'll go through the topic that is animals lifestyle, and this is basically for class 5th topic. This is class 5th topic in CPSC board, and this will also help out other boards also. So contents of this video will remain till breathing and animals and organs for breathing. Okay, animal lifestyle is a very vast topic. Lifestyle means how do the animal they breathe, they feed, they take up, how do they live, they take up oxygen, how do they breathe, they feed, the movement in animals. All these topics are covered under animals lifestyle. But this is a very vast topic, so all these things means the movement, the feeding, the protection process of the animals, they all cannot be covered in one video. So in this video we'll go through breathing in animals and the organs which are required for breathing. So let's start with the video. Okay, before going through the main topic, I'll brief you about what are the different types of animal. This is what you must have learned earlier, but we are briefing out so that before explaining the topic, there is a base which is being built. So I'm basically building the base for the explanation further. Okay. Now animals, they are found on land, water and air. We all know this. The land animals like tiger, buffalo, zebra, camel, deer, elephant, monkeys, they all are land animals, and these are called as, they live on land means their habitat is land, they are called as terrestrial animals. Next is water, the animals which live in water. These are fishes, scorpions, or this starfish. These are aquatic animals. They survive in water. They are called as aquatic animals. Third one is air. The air means their habitat is there. They basically spend their time flying. That is like eagle, bee, dragonfly, bat, butterflies. These are the aerial animals. Okay. Now different animals have different habitats. Habitats mean where they basically live. So in order to survive with their surrounding, because the one which is living on, the animal which is living on land cannot have the same features like the animal which is living in water. Okay, the buffalo and the fish, if you compare, they have different body structure, they have different breathing process. So all these things is to adapt to their environment or to survive in their environment. Okay. So in order to survive with their surrounding, animals have to adapt their different lifestyles. Wondering why I have kept this pic over here. This is to show that we human beings, we adapt ourselves to the environment, to the temperature outside by wearing different types of clothes. In winter we wear sweaters, jackets, socks, caps. In summer we wear dresses, t-shirts, shirts and t-shirt and capris or light clothes which are basically made of cotton or hosiery. Okay, we human beings can do that because we are in much higher order than as compared to animals or the birds or any animal which is there on land. The highest order is of human being. We can do that because we have those capabilities to do that. Means we also change our lifestyle according to the season. हम अपना lifestyle तो change कर लेते हैं according to the season, but you cannot expect the animals to do that. Okay, animals cannot wear clothes on their own. You see, the animals which are living in hilly area, जो ठंड में जहाँ पे रहते हैं, they have much fur on their body, and if you see the camel which is living in desert, उसके body पे fur नहीं होता है because they do not need that. उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करना है सर्दी से, वहाँ पे गर्मी होती है इसलिए उनकी बॉडी पे फर नहीं होता है. They have their just the simple skin. So you see, animals, they have different lifestyle. Means they are naturally adapted. They naturally adapt themselves to survive in the environment. Okay, so you see, human beings can do that adaptation. We can adapt ourselves, but the animals, they have the natural adaptation, or this is what these natural adaptations which they have to survive in the environment is actually called as animal lifestyle. Means अपने ही environment में survive करने के लिए जो उनकी body में changes होते हैं, मतलब changes होते हैं या उनकी body में जो natural चीजें होती हैं उस environment में जिंदा रहने के लिए, वो
उसको हम कहते हैं एनिमल्स लाइफ स्टाइल. ओके, so moving on to the next slide. Okay, now you see there are different types of animals: insects, birds, reptiles, fishes, amphibians and mammals. Reptiles क्या होते हैं? वो vertebrates होते हैं. Vertebrates are those which have the this spinal cord. Okay, or reptiles are like crocodile, lizard, snake. These are reptiles. Okay, they basically have very dry skin or scaly skin. इनके skin जो होती है वो dry और scaly, मतलब थोड़ी dry सी होती है. And fishes, we all know, amphibians are those which live both on land and water, like frog, tadpoles. These all the animals are there which are living both on land and water. जो land में भी survive करते हैं और जो water में भी survive करते हैं, that are called as amphibians. Reptiles मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जिनके पास spinal cord होती है, vertebrates होते हैं. ये तरीके के vertebrates क्या होते हैं? वो जिनके पास spinal cord होती है. और reptiles are like snake, crocodile, lizard. These are reptiles. Okay, mammals are those which give birth to their young ones, जो egg नहीं ले करते हैं. mammals क्या होते हैं? वो animals होते हैं जो egg ले नहीं करते हैं, बल्कि they give birth to their young ones and they feed their young ones on their own milk. For example, you see elephant give birth to their baby elephant and they also feed their own milk to their young ones. Okay, now all these animals you see, these categories which I have told you, like insect, birds, reptiles, fish, amphibians, all different sizes and they have different shapes of their body. For example, if you compare the shape of a butterfly and elephant, there are huge differences there. Okay, they have different body features, behaviors and habits. अब बिहेवियर कैसे अलग हुआ, बॉडी फीचर्स तो हमें समझ में आ गया कैसे अलग हुआ. बटरफ्लाई की देखिए बॉडी कैसी कलरफुल है और दे हैव अ डिजाइन ओवर इट. बट इफ यू सी अ एलिफेंट तो उसकी बॉडी पे कोई ऐसा डिजाइन नहीं होते हैं. दे आर बेसिकली ऑफ दिस ग्रे कलर. और ओके, नाउ बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है. अब सपोज the butterfly can fly, but elephant no. The habits, they are different. Means butterflies, they feed on the nectar of the flowers, but what can you expect an elephant to drink the nectar of a flower? No. And elephants, they eat bananas, they eat grass, they eat different things. Okay, but butterfly cannot eat banana. Okay, so these things, they are different animals because they need to survive in their environment. Now you see, in order to survive in their environment, these animals have special structures for breathing, feeding, movement. Breathing means taking oxygen and breathing out carbon dioxide. Feeding means to eat. Movement, from moving from here and there. If you compare in movement, आप अगर movement में compare करें तो butterfly can move from one place to another by flying, but elephant cannot do that. Elephant, they need to walk, or elephant to tiger, dogs, they cannot fly, they have to walk through that place. Okay, but butterfly can fly through that same distance. Reproduction कैसे अलग होता है, अब ये देखिए. Reproduction, now you must have seen the birds, they lay eggs. Okay, and from that, and they sit on it, hatch, and then the egg, they get hatch. Okay, they hatch their own egg by sitting on it. उसको warmth provide करती हैं birds, and then the egg, it hatches and the new young ones, they come out from the egg. But other animals, if you see, like mammals, which are mammals that are elephant, tiger, dog, cat, they do not lay egg, they directly give birth to their young ones. Okay, so see, reproduction का भी process अलग होता है, different animals में different होता है. Growth भी अलग होती है. Now you see, if you the butterfly, जो butterfly होती है वो from their eggs, the butterfly from the egg, the egg, it had different stages and then it becomes a butterfly. So it takes less time. But if you see the growth of animals in elephant के बेबी को छोटे से बड़े होने में टाइम ज्यादा लगता है.
और बटरफ्लाई को फ्रॉम द एग टू बिकम अ बटरफ्लाई इट टेक्स लेस टाइम. प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन और वेदर से प्रोटेक्शन के लिए भी इनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग फीचर्स होते हैं. अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एनिमीज और फ्रॉम द weather conditions. Okay, so to live, to protect themselves from the enemies and from the weather condition, all the animals they have different structures. Okay, so continuing with the next video, we come to breathing in animals. Now here's the topic which I have told you in the starting, that we'll continue with breathing in animals. Till now I have given you brief, or I have just built the base for the explanation of the whole chapter. Okay, so now we'll continue with what is the need of oxygen for animals. We all know, like human beings, all the animals they take in oxygen and they breathe out carbon dioxide. Oxygen is essential to produce energy in the body of animals. Okay, why is oxygen needed? Because all the animals need oxygen to produce energy. ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे फूड को बर्न करता है ना. ऑक्सीजन दे बर्न द फूड विद इन देयर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज. ऑक्सीजन इट एक्चुअली बर्न्स द फूड विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो फूड होता है उसको अगर बर्न नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी. तो सो इन ऑर्डर टू बर्न दैट फूड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. Animals get their oxygen from their surrounding where they live in. Now you see over here I am putting a mark over here. Why? From the surroundings. Surrounding does not only mean from the air. So you see in the pic there, the dog which is there, there's a girl which is there. Both this dog and girl they are getting oxygen from the air. But if a fish was also here, would that be able to get the oxygen from air? No. Fish get their oxygen from the water, or the oxygen which is dissolved in the water that is being taken up by the fish. So you see, oxygen from their surroundings, जहाँ वो रहते हैं उसी surrounding से ही उनको oxygen चाहिए होती है, from where they are living in. Okay, I hope this thing is clear. So why is oxygen required for animals? That is a very clear topic. If there's any doubt, you can surely put it down in the comment section. Now you see, land and air animals, they get their oxygen from air. This I have told you, from the environment where they are living they get their oxygen. Land and air animals, they get it from air. Aquatic animals get their oxygen from water. You see aquatic animals like fish, tadpoles, they all get their oxygen from water. Different animals have different systems for breathing. You see, we all know that human beings, they have lungs for breathing, but is it the same for every animals? Other animals? No. All the animals, they have different things, or you can categorize according to that. Category होती है animals की, जैसे fish के पास gills होते हैं breathing के लिए. Insects, they have spiracles. In this video we'll discuss spiracle insect की breathing process हम discuss करेंगे. तो you see, plants, they create oxygen with the photosynthesis, and animals, they take in the oxygen that is dissolved in the air. Air से कौन लेता है? जो land या terrestrial animals होते हैं, या फिर जो aerial animals होते हैं. And जो oxygen water से लेते हैं वो होती है aquatic animals. Now you see, mouth is open, the water enters the body of the fish, and the gills, they are closed. These are the gills which are there. आपने देखा होगा, और जब फिश ने देखा होगा तो आपने देखा होगा साइड में ओपनिंग होती है, that is actually gills. इस gills के थ्रू वाटर पास होता है. वाटर जब पास होता है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो टेक अप कर लिया जाता है by the blood of the fish. फिश गिल्स में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहीं से ही, यहाँ गिल्स से ही वाटर निकाल के यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास कर दी जाती है बाहर. Okay, now I hope this is quite clear to you. So if you have any doubt, you can surely tell me in the comment section. So this thing is clear. And now you see, organs for breathing. Now we will discuss different organs which are there in different animals for breathing. Okay, so first we will discuss from single celled animal. जो सबसे छोटा animal होता है, जैसे अमीबा, जो एक सेल का बना होता है,
दैट इज अमीबा। और वो कैसे ब्रीथ करता है? अमीबा दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस। अब जब वो खुद एक सेल का बना हुआ है अमीबा, तो उसके पास क्या ऑर्गन्स होंगे? कोई ऑर्गन नहीं, वो ऑर्गन्स तो और सारे सेल्स से बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स। तो अमीबा इट ब्रीथ थ्रू देयर ओन सरफेस। ओके, respiration of amoeba, now you see over here, they take in oxygen through the same surface and give out carbon dioxide through the same surface. No lungs, no nose for breathing, only their surface which is there taken up. They take up oxygen from it and they eliminate the waste, that carbon dioxide, from the same surface. Exchange of oxygen and carbon dioxide occurs through the plasma membrane through different fusion. Plasma membrane क्या होती है? जो सेल, ये जो हमारी ये जो अमीबा की बाहर ये सेल होता है, उसके बाहर जो सबसे ये जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वो टेकन होती है, और इसी के थ्रू जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग गिवन आउट। सो अमीबा का तो बहुत ही सिंपल था। नाउ वी मूव ऑन टू द फर्दर क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन, दैट इज ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स पे आ गए हम। अमीबा सबसे छोटा था, उससे थोड़ा सा बड़े पे आ गए, दैट इज इंसेक्ट्स। Now that is quite interesting. Now insects, they breathe through the special opening called as spiracles. Now you see over here, this is an insect, or you see grasshopper. Now insect breathe through the spiracles. There are small holes on the side of the body that are called as spiracles. Okay. Now spiracles are opening on the side of the insect's body through which insect breathe in and breathe out. स्पाइरकल्स क्या होती है? बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती है, ये साइड ऑफ द बॉडी के साइड पे होती है इंसेक्ट्स के, एंड फ्रॉम दिस ओनली दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ओपनिंग एक्चुअली लीड टू ट्यूब्स और ट्रैकिया। अब ये जो ओपनिंग्स होती हैं, ये बाहर से तो ओपनिंग है, पर अंदर भी तो कोई सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बींग्स में देखो, नोज है, नोज के वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज, तो नोज के बाद अंदर हमारे पास लंग्स भी तो है, लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वहां फिर वी ब्रीथ आउट तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, लेकिन अंदर हमारे पास लंग्स है जिसमें एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। वैसे ही स्पाइरकल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स में होते हैं। दीज आर एक्चुअली, यू कैन कंपेयर इट विद द स्पाइरकल्स को आप ह्यूमन बींग्स में नोज से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो स्पाइरकल्स जो होते हैं इसके थ्रू सिर्फ एयर अंदर ली जाती है, मींस ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, और इसी के थ्रू बाहर ब्रीथ आउट की जाती है। These opening lead to a system of tubes called as trachea. अब ये देखिए, अब ट्रैकिया क्या है? अंदर यहाँ पे जैसी, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेकंड वाला। अब ये है आपकी बॉडी वॉल, मींस ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ओके, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये स्पाइरकल है आपका, ठीक है, ये बॉडी वॉल है और ये स्पाइरकल है आपका। दिस वन इज स्पाइरकल। ये देखिए आप छोटी सी ओपनिंग देख रहे हो यहाँ पे, तो ये ओपनिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, और यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं अंदर, मींस की बॉडी में अंदर ट्यूब्स होते हैं। दीज ट्यूब्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रैकिया। और ट्रैकिया क्या होते हैं? फर्दर डिवाइड होते हैं। दीज ट्रैकियाज डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू ब्रांचेस। अब ये देखिए ट्रैकिया, ये एक ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। दिस ट्रैकिया इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड फर्दर ब्रांचेस, सब डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेस। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स। ट्रैकिया होता है मेन ये, और इसके बाद जो फर्दर डिवीजन होता है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स। ओके, तो ये जो है इसके, ये पूरा सिस्टम है, इसके थ्रू एयर इज बीइंग टेकन अप एंड इट इज बीइंग इनहेल्ड, एक्सहेल्ड आउट। ओके, इनहेल भी इसी से होता है, एक्सहेल भी इसी के थ्रू होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये स्पाइरकल्स किस काम क्यों होते हैं बॉडी पे। तो एयर एंटर्स द स्पाइरकल अलाउइंग द ऑक्सीजन टू ट्रैवल अलोंग द नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ये नेटवर्क ही तो है ट्यूब्स का, जो एयर यहाँ पे आती है, यहाँ से स्पाइरकल्स के थ्रू जो एंटर होती है उसको ट्रैकिया के थ्रू जाती है, फिर ट्रैकियोल्स के थ्रू जाती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, एंड इट रीचेस द सेल्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। और इंसेक्ट की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके पास थ्रू ट्रैकियोल्स, ये देखिए ट्रैकियोल्स होते हैं, जिसमें बताया ना फर्दर डिवीजन होता जाता है ट्रैकिया का, तो ट्रैकियोल्स तक आता है। तो यू सी ओवर हियर, ट्रैकियोल्स तक जाते आते फिर वो वहां तक ऑक्सीजन चली जाती है हर सेल्स तक, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स द सेम
path and is being breathed out. Okay, I hope this is clear to you. तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, जैसे कि हमारी नोज, हम नोज के थ्रू इनहेल करते हैं, बस वो फर्दर इनसाइड जाकर के लंग्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का, फिर वहां से ब्रीथ आउट करते हैं। तो स्पाइरकल्स जो होते हैं वो नोज का ही काम करते हैं ऑन दी बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। ओके, so this was done. Now you see air actually enter the body through this network. जो air होती है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया इसको वैसे तो air जो होती है वो इसी नेटवर्क के थ्रू एंटर होती है। Now you see over here, these are the spiracles, small openings. Oxygen is taken in, carbon dioxide is given out through this network. अब इसी नेटवर्क के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और वहीं से ही वापस बाहर भी आती है। Insect blood does not contain hemoglobin. The hemoglobin is actually a oxygen carrying pigment, एक पिगमेंट होता है और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ह्यूमन का ब्लड रेड कलर का होता है। ह्यूमंस में जो ब्लड रेड कलर का होता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो रेड होता है और इसी ये हीमोग्लोबिन ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो होता है ये इंसेक्ट्स में नहीं होता है। इंसेक्ट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है व्हिच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। आपको ये समझ में आ गया कि ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट तो होता है, लेकिन उसके बाद जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई है वो ब्लड में डिसॉल्व होकर अंदर कैसे जाएगी, हीमोसाइनिन के थ्रू। ओके, सो आई होप till here it is clear. If you have any doubt, you can surely put it down in the comment section, share it with your friends, with the students or with the teachers. If you have any doubt, you can surely put it down in the comment section. Okay, so I hope you like the video. Please do hit the like button, subscribe to the channel and do share it with others. So the next part will be regarding the breathing in fishes, in frogs and in human beings. Okay, I have made the video short so that it is much easier to explain. जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक साथ एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा करके सही से एक्सप्लेन करना सही रहता है। So I'll upload the next video as soon as possible. Thank you for the watching. Thank you for watching the video. Thank you. Do share, like and subscribe the channel. Subscribe to the channel. Thank you.